Hello and once again welcome back to NEET Decoded, and in this video we'll study about the structure of the human digestive system. For this we'll take up a NEET question for discussion. So let's start. And the question is, identify the correct statement with reference to human digestive system. The options are 1. Ileum opens into small intestine. 2. Serosa is the innermost layer of the alimentary canal. 3. Ileum is a highly coiled part. And 4. Vermiform appendix arises from duodenum. So let's discuss. This is the human digestive system as you can see in the picture. Now we can have an overview to understand the question properly. So the human digestive system comprises of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, and various other digestive organs, which you can see here. So esophagus, you can see this is the thin pipe-like structure. This is the food pipe actually, and in the esophagus you have the salivary glands. These are the various parts of the salivary glands, right? And pharynx, here the pharynx is present. This is the common opening for food and air passage. Now esophagus leads into the stomach. You can see the stomach here. This is a very important part of the human digestive system. Now the stomach comprises of the cardiac, fundic, and pyloric region. So the esophagus opens into the cardiac part of the stomach, right? Then you can see this is the fundic and then the pyloric part, right? Now pyloric part opens into the small intestine. Duodenum is a part of the small intestine, and the last part of the stomach, which is the third part, which is the pyloric part. This is, here you can see the pyloric part, it opens into the duodenum, right? So now moving on to the small intestine. The small intestine again has three parts, which are duodenum, jejunum, and ileum. You can see here in this picture, right? So you can see the duodenum here, then you have jejunum, and jejunum is the second part, and this is the ileum, which is the highly coiled part. So duodenum is the first part which is connected to the stomach, and then you have the curved part, which is the jejunum, and the highly coiled part, which is the ileum of the small intestine, right? So this is the structural detail of the small intestine. Now ileum of the small intestine opens into large intestine, which again has three parts, which is cecum, colon, and rectum. So you can see here that the ileum here opens into cecum. Here it opens into cecum. Then it has the next part of the large intestine, which is the colon, and then the rectum. ठीक है, the colon also has three parts, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ascending, transverse and the descending colon, right? एक थोड़ा डिटेल पिक्चर इसका देख लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो रहा है. तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम, एंड देन इट ओपन्स इनटू सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, सीकम इज अ sac like structure, cecum, and then you have the colon and then the rectum, right? This rectum you can see here, and this is the colon, which has the ascending, transverse and descending part, right? अब यहाँ पे एक और था क्वेश्चन में एक ऑप्शन एक्चुअली दिया हुआ था कि फ्रॉम वेयर डज द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस. तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, you can see here, it arises from the cecum of the large intestine. So cecum is a sac like structure. Now it has symbiotic microorganisms, और vermiform appendix भी यहाँ से arise होता है. Now vermiform appendix क्या है? It is a vestigial organ. कहने का मतलब कि it is rudimentary and functionless organ of the digestive system. So इसलिए इसको vestigial organ कहा जाता है. तो इसका जो source है या origin है, that is the cecum of the large intestine, right? सो मूविंग फर्दर, अब एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का. सो हिस्टोलॉजिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, वॉल में कितने लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये ऊपर से नीचे सारा जो बेसिक प्लान होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो ये है. तो इसमें क्या होता है, 4 लेयर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वॉल में. सबसे फर्स्ट लेयर है सेरोसा. इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट एंड इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम. ठीक है, तो सेरोसा हमें याद रखना है कि इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट और मेसोथेलियल सेल्स से बना हुआ होता है. नेक्स्ट कम्स द मस्कुलरिस लेयर. यहाँ पे देख रहे हैं, मस्कुलरिस लेयर होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है. देन यू हैव द सब म्यूकोसा लेयर,
which is made up of loose connective tissue. ये सब mucosa layer आप है देख रहे हैं. Next is the mucosa, which is the innermost layer and is made up of epithelial cells. और इसमें काफी सारे इनफोल्डिंग्स होते हैं. तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फोल्डिंग्स होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, तो विलाई है, काफी वेल नोन स्ट्रक्चर है, और इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसमें स्टमक में भी कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं, उसको रूगी कहते हैं. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं उनको विलाई बोलते हैं. उसमें ब्रश बॉर्डर जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है. स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में, और उसे ब्रश बॉर्डर कहते हैं. सो उसको क्या करता है, उससे भी उसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस इंक्रीज होता है. सो ये है सारा स्ट्रक्चर जो है हिस्टोलॉजिकल, और स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो हमें आइडेंटिफाई करना था करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद we come to the conclusion that ileum is a highly coiled part, which is the only correct statement that has been given here, right? So now we come to the end of the discussion, and for multiple choice questions with detailed explanation, you can log into learn.brigadme.com. The link is available in the description box. Please check it out, and do subscribe to my channel for updates on NEET biology content. Thank you for watching.